हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम इस वीडियो में VxLAN EVPN रूट टाइप 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम Inclusive Multicast Ethernet Tag route भी कहते हैं। Even though the name mentions about multicast, but root type 3 में we are talking about broadcast, unknown unicast and multicast traffic. So how is it different to root type 2 या MAC/IP advertisement route? तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे कोई एंड होस्ट कोई ट्रैफिक सेंड करता है टुवर्ड्स इट्स कनेक्टेड लीफ, जो लीफ है वो एक रूट टाइप 2 जनरेट करता है और वो इस रूट टाइप 2 को बाकी लीव्स को एडवर्टाइज करता है वाया द स्पाइन रूटर। तो इस केस में जो लीफ 1 है वो रूट टाइप 2 जनरेट करेगा टुवर्ड्स स्पाइन 1 एंड स्पाइन 2, और जो स्पाइंस हैं वो इस रूट टाइप 2 को बाकी लीव्स, जो हमारे केस में लीफ 2 और लीफ 3 है, उन्हें एडवर्टाइज कर देंगे एज ए रूट टाइप 2 NLRI. But what happens if an end host sends a broadcast frame or a multicast frame towards the leaf? तो let's say VLAN 10 client 1 को VLAN 10 client 2 को कोई ट्रैफिक सेंड करना है और VLAN 10 client 1 के पास VLAN 10 client 2 की आप एंट्री रिजॉल्व नहीं है या आप एंट्री नहीं है। तो उस केस में VLAN 10 client 1 एक broadcast traffic send करेगा towards leaf 1, and this is where root type 3 comes in. और root type 3 के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है underlay replication which is also called multicast, और दूसरा होता है ingress replication। जो पहला टाइप है वो है underlay replication, और ये multicast का यूज़ करता है underlay नेटवर्क में, और इसका बेनिफिट ये है कि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक प्रोसेस कर सकता है यूजिंग मल्टीकास्ट। और इस केस में लीफ जो होता है, जो कनेक्टेड लीफ है, जो फॉर एग्जांपल हमारे केस में लीफ 1 है, वो इस ब्रॉडकास्ट का एक ही ट्रैफिक या एक ही पैकेट सेंड करेगा टुवर्ड्स इट्स कनेक्टेड स्पाइन या टुवर्ड्स इट्स कनेक्टेड आरपी। और जो आरपी है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पाइन 1 को आरपी मान के चले, तो जो आरपी है वो इस ब्रॉडकास्ट पैकेट को या ब्रॉडकास्ट फ्रेम को बाकी इंटरेस्टेड लीव्स को फॉरवर्ड करेगा। और जो इस मेथड का डाउन साइड है या डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये मल्टीकास्ट का यूज़ करता है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, और इसे ऑपरेट करने में और मेंटेन करने में काफ़ी एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। और जो दूसरा अप्रोच है फॉर हैंडलिंग बम ट्रैफिक वो है इनग्रेस रेप्लिकेशन। इस केस में जो इनग्रेस लीफ है वो इस बम ट्रैफिक का या बम पैकेट का n number of copies बनाएगा, where n stands for the number of leaves in the network which have the same VNI configured. For example, हमारे केस में VLAN 10 is mapped to VNI 100,010, और अगर लीफ 2 और लीफ 3 में सेम VLAN to VNI मैपिंग configured है, तो लीफ 1 इस केस में इस बम पैकेट की दो कॉपी बना के towards leaf 2 और leaf 3 सेंड कर देगा via the spines। और अगर फॉर एग्जांपल किसी नेटवर्क में there are 10 leaves with the same VLAN to VNI mapping, तो उस केस में leaf 1 या ingress VTEP इस बम पैकेट के 10 कॉपीज बना के towards those leaves सेंड कर देगा। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि हाउ डज द VTEP या हाउ डज द ingress VTEP figure out who are the interested VTEPs? For example, हमारे केस में जो ingress VTEP है वो है leaf 1। How does leaf 1 कि मुझे ये बम ट्रैफिक कितने लीफ को भेजने और मुझे इस बम पैकेट के कितने कॉपीज बनाने हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, जो ingress VTEP है वो n number of copies बनाता है of the bum packet, and this n depends on the number of leaf switches who participate in the same VLAN to VNI mapping, yeah, same VxLAN network. So coming back to the question, how does the Ingress VTEP figure out who are the interested VTEPs? Friends, this is done through BGP EVPN route type 3. ये एक डायनामिक प्रोसेस है और इसमें यूजर इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये replication list is automatically formed from the BGP EVPN route type 3 without any intervention from the user. तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर
leaf 1, leaf 2 और leaf 3 पे सेम VLAN to VNI मैपिंग कॉन्फ़िगर्ड है, तो leaf 1 ingress bump ट्रैफिक की कॉपी leaf 2 और leaf 3 को भी सेंड करेगा, और इट इज़ वाया रूट टाइप 3 कि leaf 2 और leaf 3 leaf 1 को इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ मैं भी VNI फॉर एग्जाम्पल 1010 या 10,010 में पार्टिसिपेट करता हूँ, सो इट इज़ थ्रू रूट टाइप 3 कि लीफ 2 लीफ 1 को ये इन्फॉर्म करेगा, ये अपडेट करेगा कि यस आई ऑल्सो पार्टिसिपेट इन VNI 10,010 इन दिस केस। और जैसे ही ये अपडेट या ये रूट टाइप 3 लीफ 1 को रिसीव होगा, तो लीफ 1 विल क्रिएट a replication list per VNI, और गोइंग फॉरवर्ड जैसे ही कोई बम्प पैकेट लीफ 1 के पास आता है, वो ये बम्प पैकेट बेस्ड ऑन द रेप्लिकेशन लिस्ट लीफ 2 और लीफ 3 को फॉरवर्ड कर देगा वाया द स्पाइन रूटर्स। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 लीव्स होते या 10 VTEPs होते, तो लीफ 1 या इंग्रेस VTEP 10 कॉपीज बना के वाया स्पाइंस इस बम्प पैकेट को उन लीव्स को भी फॉरवर्ड कर देता। तो इवन दो इनग्रेस एप्लीकेशन बम ट्रैफिक फॉरवर्ड करने का सबसे ऑप्टिमम मेथड नहीं है, बट ये एक सिंपल मेथड है and it's very easy to configure and manage. To summarize what we discussed in the last section, EVPN root type 3 के through हम एक dynamic replication list बनाते हैं which stores all the remote destination pairs या remote VTEPs that participate in the same L2 VNI, या वो VTEP जिस पे कि VLAN to VNI mapping same हो as compared to the Ingress VTEP. Hence we call it Ingress replication. So friends, let's now discuss what triggers a router या VTEP to generate a root type 3. The root type 3 is generated immediately and sent to all participating VTEPs as soon as a VNI is configured at the VTEP and is operational. तो जैसे ही किसी लीफ के NV इंटरफेस के अंदर हम VNI डिफाइन करते हैं, इमीडिएटली वो लीफ एक रूट टाइप 3 एडवर्टाइज करेगा टुवर्ड्स स्पाइन, एंड स्पाइन के थ्रू ये रूट टाइप 3 हम बाकी लीफ पे लर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने लीफ 1 पे VLAN 10 को VNI 10,010 से मैप किया, और वही मैपिंग हमारे लीफ 2 और लीफ 3 पे भी प्रेजेंट है, तो जैसे ये रूट टाइप 3 लीफ 2 और लीफ 3 के पास आएगा, तो इट कैन चेक I have VLAN 10 to VNI 10,010 mapped as well. So going forward, if I receive any bump traffic, I can forward it to leaf 1 as well because it has the same VLAN to VNI mapping. क्योंकि उसके पास भी same VLAN to VNI mapping present है. So because of root type 3, every VTEP in the network is aware of all the other remote VTEPs that need to be sent a copy of the bump packet in a given VNI. So friend, this is very important कि जो ingress application हम configure करते हैं वो per VNI होती है, तो किसी router में it can be running ingress replication and underlay replication at the same time as it is done per VNI. For example, for VNI 10,010 we could be running ingress replication, and for VNI 10,020 हम underlay replication चला सकते हैं. So friends, let's quickly discuss the signaling approach which is deployed by the VTEPs. Because हमारे पास multiple choice available होते हैं, तो each VTEP must inform the other VTEPs of what it can support. Root type 3 EVPN message carries a BGP attribute called PMSI, or Provider Multicast Service Interface, which identifies or informs the other VTEP of the kind of bum packet handling method supported by the local VTEP. And as per defined by RFC, these methods could be one of the ones listed below. तो अगर हम ingress replication method का use कर रहे हैं, तो we will see the option 6 listed, which stands for ingress replication. And for folks who are interested in the visual representation, if you look at the capture of a root type 3 BGP packet that was sent by a leaf to one of the spines. So if you look at the PMSI attribute, so this tunnel type has a value of 6, which stands for ingress replication. तो जैसा कि हम इस Wireshark capture पे देख सकते हैं, जो leaf है वो spine को या spines को
जब root type 3 send करता है तो उस root type 3 के BGP update में there is a field called PMSI और उस field में एक attribute है which identifies the tunnel type supported by the local VTEP. And within this PMSI channel attribute, there is also a field called tunnel endpoint, which identifies the originator of the root type 3, which in our case is 3.3.3.3, which is the loopback address of leaf 1. So let's quickly discuss the contents of EVPN root type 3. So as discussed, key EVPN root type 3 is sent as a BGP NLRI. So it has a root distinguisher value, an Ethernet tag which is set to 0 by default, the IP address field which is set to 32.4 IPv4, the IP address of the sender, which is in our case is 3.3.3.3, which is the leaf 1 loopback IP. And then as its BGP update, it has all the BGP path attributes. इसमें BGP के सारे path attributes भी होते हैं. For example, the origin type, the AS path, local preference, extended community में हमारे पास it will contain the root target. So it has the root target value as we can see here. So yeah, friends, this is a high-level overview of EVPN root type 3, also called Inclusive Multicast Ethernet Tag route. And I would highly encourage you to watch this video along with the video for EVPN root type 2 because both of these root types work hand in hand. And I will highly encourage you to lab the whole network. And I've shared the config for the lab used in this series in one of my previous videos. So friends, thanks for watching the video. If you like this video, please share, comment, and subscribe if you're new to the channel. And I will see you all in the next module, which will be for EVPN root type 1, 4, and 5. Thank you very much.